not once to live and count each day a separate life. Believe that life is worth living and that belief will help to create a fact. Welcome back to Z Connect Season 2. Are you connected? It's where we believe to live life at the fullest with its news, views and latest happenings. So let's check out what Front Page has to offer you this week. The first automated teller machine for the visually impaired has opened in Sharjah. The new ATM launched by Sharjah Islamic Bank enables the visually impaired to complete the entire transaction unassisted. The new machine features a large braille keypad in both Arabic and English and a high-resolution screen, voice-assisted interface also in both languages, which could be heard through speakers or headphones for more privacy. And another key difference between the new machine and a regular ATM is the 3 security cameras as opposed to 1. The weather is expected to remain mercilessly hot this month, with mercury staying mostly in the mid-40 range. The conditions could further aggravate with the hot southerly and southeasterly winds coming in from the heat cyclones that develop in the empty areas. According to the Met Department, the change in the country's weather is not unusual, as it is in accordance with the seasonal atmospheric depressions in the desert areas. The Emirati youth from all over the UAE have been invited to enroll for the second edition of Tamheen, the sports vocational program launched by the Dubai Sports Council. As per the authorities, the first edition of the program was a huge success and they needed to have young minds involved fruitfully during the summer months. As per the prerequisites, applicants have to be students in the higher secondary stages and each of them have to submit an academic certificate from the previous year along with a passport copy, identity card and a nomination certificate issued by the school. The Tamheen program will run parallel to the Hamdan bin Mohammed program for sports leadership that is also conducted by the Dubai Sports Council. The inaugural edition of the Tamheen attracted 50 young men and women from across the country last summer. We at Z Family truly believe the quality of one's life is the quality of their relationships. And Z Family is the only way we get to share with you the different lives and their relationships. So let's check out our Z Family for this week with Andrea. In the 21st century, there is lots that has changed, but there is one thing that remains the same since ages, and that is the definition of family. हफ्ते दर हफ्ते हम आते हैं आपसे जुड़ने और इस हफ्ते हम आए हैं सागर के घर. Hi everybody, how are you all? Hi. Tell us something about yourself. मेरा नाम राजेश है और हम लोग यहाँ पे हमारा फैमिली बिजनेस है ज्वेलरी का और हमारे फादर 47 में यहाँ पे आए, तभी से हम लोग यहाँ पे यूएई में है. यूएई हमारा कंट्री के जैसा हो गया है और बस बाकी तो पायल और मेरा बेटा राहुल वो डीजे है, ये डांसर है. सो इतनी बड़ी गिफ्ट हमें मिली है गॉड से. हाय, माय नेम इज़ लता और मैं वैसे पायल की मम्मी हूँ और बस हम लोग भी सारे सब जगह पे इसको सपोर्ट करते हैं और मतलब जो कुछ भी है हमारा इसी की वजह से है. मतलब मैं, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड और मेरी ह्यूज फैमिली है पुणे में. मेरी सास, जेठ, जेठानी, देवरानी, सब बच्चे हैं, सब आज सब लोग ऑनलाइन बैठे हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं सबको देखने के लिए और सब खुश हो रहे हैं ये देख के कि पायल यहाँ तक पहुँची है. Hi, my name is Payal. I study in Leaders Private School and I'm 15 years old and I dance. Hi, I'm Khushbu. He is my maternal uncle Rajesh, my maternal auntie Lata and my cousin Payal. I'm married. My husband is working in Golsuk and I'm doing babysitting right now. What does family mean to you? फैमिली, अगर फैमिली नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं है. मुझे याद है मैं 94 में यहाँ पे अकेला था, सब लोग इंडिया गए थे, तो वो टाइम पे मुझे लगा कि क्या फैमिली क्या चीज़ होती है, यानी उसके बगैर एक चीज़ नहीं हिलती थी घर में. और सोच के ये होता था कि कब ये 6 महीने का टाइम निकल जाए. ये लोग सारे 6 महीने के लिए शिफ्ट हुए थे वहाँ पे और माँ पापा उन लोगों ने हमें ये
जन्म दे के लाए, तो हमें उनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए। फैमिली मेरे लिए बहुत मायने रखती है। फैमिली के अगर फैमिली ना हो तो जैसे कुछ नहीं है, विदाउट फैमिली नथिंग। फैमिली के साथ कुछ भी हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी फैमिली जो सपोर्ट करता है वो कोई नहीं कर सकता। और फैमिली में जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमें सीख देते हैं, उनसे जो सीख मिलती है वो हमें कहीं से भी नहीं मिलेगी। Family means everything to me. Every individual person has their own personality. Everyone means everything to me. My mom, she supports me everywhere. My dad also supports me everywhere. Anything, example, I'm doing a dance. Songs selection is done by my dad. Choreography is done by my mom. Then music's, the mixing and all is done by my brother. Everything is done by everyone. Every individual has every single part of my life. Family is the part where each and every family, each and every person has different characters which play an important role in our life. Share with us that special moment that you bonded as a family. ऐसा पल में तो फर्स्ट टाइम जब भी पायल स्टेज पे डांस करने के लिए गई थी, तो हमें डर लग रहा था कि वो कर सकती है या नहीं कर सकती है। और उसके बाद जो अभी लास्ट प्रोग्राम हुआ था DID, तो जो वहाँ पे स्टेज था, वो स्टेज वो डॉल्फिन उसमें था और बिल्कुल पानी के नज़दीक था। तो डांस करते करते जैसे वो आगे आ रही है, तो हम लोग वहाँ से डरते थे कि वो शायद नीचे ना गिर जाए। मुझे इतना गुजराती नहीं आता थी, मतलब तो मैं जहाँ पे शादी करके आई हूँ तो मेरे घर में मेरी सास है, मेरे ससुर थे, तो ही इज़ नो मोर विथ अस नाउ। लेकिन मेरी सास ने मुझे इतनी अच्छी तरह से गुजराती सब जो कुछ भी नहीं मुझे पता चलता था, सब कुछ अच्छी तरह से सिखाया। और कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने मुझे पढ़ना भी सिखाया गुजराती, जब मुझे नहीं आती थी, तो वो मुझे बहुत याद है। My first stage performance that I did, that is on Brazil, that was taught by my brother and my sister, and they actually had a fight that who is going to teach me that particular dance, and when I won for that dance, that was my favorite dance till now. My marriage is love marriage, so my dad and everyone knew that I'm going on with someone, but they were just saying that it's a love marriage, it's love, it's attraction, what is that? And one day suddenly my dad came and said that are you sure you want to marry that guy? And that was the best moment in my life. Tell us, what does Zee TV mean to you all? Zee TV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यानी अगर मैं मेरी उम्र 15 साल की ले लूँ तो हमें ऐसा कोई चांस नहीं मिलता था, यानी अगर हम लोग की एज पीछे जाए तो। लेकिन आजकल बच्चों को सारी यानी जो इन्फॉर्मेशन है और उनका जो टैलेंट है उनको बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आई थिंक Zee TV अच्छा एंटरटेनमेंट है और काफ़ी सालों से हम लोग भी Zee TV पे ज़्यादा मतलब देखते हैं उस सब सीरियल्स वगैरह। Zee TV में जो कुछ भी शोज़ आते हैं सब शोज़ हमें पसंद है और अच्छे से सब शोज़ देखते हैं। Zee TV means everything almost, because my favorite show, that is Dance and Dance, comes up on Zee TV, so I always watch Zee TV. Zee TV is my first channel that I watch, so yeah, it means everything. Zee family, I belong. Zee family, I belong. Zee family, I belong. Zee family, I belong. Zee family, we belong. Thank you very much. It was a pleasure talking to all of you. And if you wish to be a part of Zee TV, all you got to do is subscribe to the Zee Family package, or do write into us at zeefamily@merazeetv.com. It's time to play hide and seek. Go take a short break, but be back really quick on Zee Connect Season 2. Are you connected?